ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਵਿਸ਼ਾ ਅਰੋੜਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, 올림픽ਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ ਦ 올림픽ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਯੂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗਡੇਲ ਸਕੂਲ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਗੌਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਗੌਰਵਾन्वित ਕੀਤਾ ਹੈ। We really are proud of you and school is as well proud of you because the Springdale School ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ when you played for like in Olympics ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 올림픽ਸ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਦ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ। ਜਦ ਅਸੀਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 올림픽ਸ ਦਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਪੈਰਿਸ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਾਕੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 2 ਮੈਡਲ ਆਏ ਤੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਆ, ਯੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਕੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਪਲਾਨਸ ਫॉर ਨੈਕਸਟ 올림픽ਸ? ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ, ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਐਲਏ 2028 올림픽ਸ ਜਿੱਥੇ ਐਲਏ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਪੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਲਰ ਮੈਡਲ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਪਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਚਿਸ ਔਰ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਦਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਲਏ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਲੱਭਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਗੇ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਕੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਸੀਨ ਕੋਚਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਸੀਨ ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਦਿਖਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ 60 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੈਕ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਸੀਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਇਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਸ਼ਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ? ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 올림픽ਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਖੇਡ ਰਹੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਜੀ ਆਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ ਉਹ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਸ਼ਮੀ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗਡੇਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ 올림픽ਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗਡੇਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਹਾਕੀ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਰੀਪੇਇੰਗ ਵਾਟ ਸਕੂਲ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਯੂ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਔਰ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜੂਨੀਅਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਟਰੋਫੀ ਅਨਵੀਲਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋ ਹੁਣ ਯੂ ਆਰ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਅ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਰ ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਗ੍ਰੇਟ ਲੱਕ ਟੂ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗਡੇਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੋਫੀਜ਼, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਓਲੰਪਿਕਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਤਕੀ, ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂ ਗ੍ਰੇਟ ਲੱਕ ਫॉर दैट। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਟੂ ਦ ਗੋਲਡ। We are wishing for the gold. Many congratulations। ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨੀਅਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੋਫੀ ਰਿਵੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗਮਗਾਂਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਾਕੀ ਦੀ ਇਹ ਟਰੋਫੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਮੈਨਸ ਜੂਨੀਅਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੇਤੂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਟਰੋਫੀ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਹੱਥ ਇਸ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰੋਫੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਲਿਫਟ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਮਾਣ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗਡੇਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਲਾਈਕ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੋ ਬਟ ਯੈਸ ਯੂ ਪਲੇ ਇਟ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਏਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਲਈ ਖੇਡੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਲ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸ਼ਮੀ ਸਰ ਜੋ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਕੋਚ, ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗਡੇਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸ਼ਮੀ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਸਰ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਨ ਐਵਰ ਵੀ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ ਐਨ ਓਲੰਪੀਅਨ ਲਾਈਕ ਯੂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਚ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਡਬਲ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲੇਡ ਫॉर ਦ ਨੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਕੀ ਨੂੰ? मैं स्पैशली थैंक्स करदा पहले पंजाब केसरी दा जी और सब तो थैंक्स करदा हॉकी इंडिया दा जी। फिर पंजाब हॉकी एसोसिएशन दा जी जिन्होंने के अमृतसर में ये जो ट्रॉफी है जी। वर्ल्ड कप की जी उसको अनवेल किया है। अनवेल स्टार्ट करने का मौका दिया और स्पेशली स्प्रिंगडे स्कूल में जी जहाँ के 5 ओलंपियन जी इस स्कूल में पैदा किया हमारी अकेडमी ने महाराजा रणजीत सिंह जी। का। जैसे मैडम ने बोला है, मैं एक ओलंपियन के नाते हिंदुस्तान टीम का सिलेक्टर भी हूँ जो कि टीम बनाते हैं। जी तो एक जो बहुत बड़ी मान की बात है पंजाब की और स्पेशली अमृतसर। जी अमृतसर में हमारी माझा बेल्ट में बहुत टैलेंट है हॉकी का। जी जलंधर में तो है ही है, बिल्कुल बिल्कुल पर लेकिन अमृतसर में भी कम टैलेंट नहीं है। इसको अगर सही तरीके से हम इस्तेमाल करें इसका टैलेंट का, बिल्कुल तो मुझे उम्मीद है कि जैसे जलंधर के काफी स्टूडेंट जो इंडिया की टीम से आते हैं, अभी पंजाब के स्पेशली अमृतसर के भी आएंगे, तो बिल्कुल। जैसे आ रहे हैं। और साहिल संधू सर का क्या रोल देखते हो आप, कितना मोटिवेट कर रहे हैं वो? हम देखते हैं उनके चेहरे पे हमेशा रहता है कि दे वांट कि हमारे अमृतसर के जो प्लेयर्स हैं उनको चांस मिले। ही वांट्स कि हमारे अमृतसर का यूथ भी प्रमोट हो। सो किस तरह से क्या रोल देखते हैं आप उनका? देखो जैसे आपने बोला है साहिल का, सबसे बड़ी बात इनके फादर और मदर की थी, जी डॉक्टर शिवेंद्र संधू, मनवीन संधू, जी जिनकी वजह से हम आज इधर खड़े हैं स्पोर्ट्स में। जी उनकी तमन्ना थी जब हमने एकेडमी स्टार्ट की थी, यही मिशन से स्टार्ट किया था कि अमृतसर में ओलंपियन हमने पैदा करने, और स्पेशली स्प्रिंगडे स्कूल जी में। बिल्कुल उसी वागडोर को आगे मैडम कीरत ने और साहिल ने पकड़ा कि हम स्पोर्ट्स के ऊपर काम करेंगे बिल्कुल और अमृतसर का और स्पेशली स्प्रिंगडे स्कूल का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल हम फिर जल्दी ही इस एकेडमी का फिर से आगाज करने जा रहे हैं जो कि हिंदुस्तान का
नाम रोशन करेंगे, स्पेशली स्प्रिंग डे स्कूल बिल्कुल। का। आज ये चमचमाती हुई ट्रॉफी देखकर बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो एस्पायरिंग प्लेयर्स हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, उनकी आंखों में एक रोशनी जरूर जागी होगी, बिकॉज दे बिलोंग्स टू अमृतसर, और अमृतसर को इतना बड़ा ग्लोरियस मौका मिला है इस ट्रॉफी अनवेलिंग का, जो कि जूनियर हॉकी के लिए टूर्नामेंट होने जा रहा है, उसके लिए। तो आप क्या सोचते हैं कि उनको कितनी इंस्पिरेशन मिली होगी? एक स्कूल को तो मान वाली बात है, और स्पेशली अमृतसर की मान वाली बात है जी कि जो ये गुरुओं की धरती है, इधर से ये ट्रॉफी का जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, और मुझे उम्मीद है कि जैसे गुरु महाराज ने एक ट्रॉफी स्टार्ट की, हम वापस भी हिंदुस्तान की टीम जीते और फिर से पूरी टीम को इसी स्कूल में लेके आएंगे और उनका ऑनर करेंगे। हम उनको बेस्ट विशेस देते हैं स्कूल की तरफ से, और अमृतसर स्पोर्ट्स मैनों की तरफ से बेस्ट विशेस देते हैं पूरी इंडिया की टीम को कि वो गोल्ड मेडल जीते, और पूरे देश का और स्पेशली हमारे इस अमृतसर का। बार जिस तरह से अगर हम बात करें शमशेर सिंह जी की, तो उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इस बार जो मेडल का रंग चेंज करना चाहते हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं सभी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को? अगर देखें हॉकी की जितनी टीम है, ओलंपियंस की जो टीम है, ओलंपिक्स के लिए खेलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहे हैं? कितनी तैयार है गोल्ड्स के लिए? अब अभी हमारी टीम जो हॉकी की बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है, जैसे कि हम बोला कि इसमें हम मेडल का रंग जो चेंज करना चाहते हैं, पूरे प्लेयर भी चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि जो कलर है उसका गोल्ड में लेके आए, जो फिर से जो हमारी यहाँ की गुम थी, मतलब खत्म हो चुकी थी, उसको हम बरकरार जो रखें। रोशनी है आंखों में, वो स्पार्क, हॉकी के प्रति जो जुनून है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से वैसे जाग जाए। ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, हर स्टूडेंट के दिल में एक ही उमंग है कि वाकई में हॉकी, इफ दे लव हॉकी, दे प्लेड हॉकी, तो उनके लिए ये बहुत ही खास मौका था आज, जो आज अनवेल की गई ट्रॉफी, एंड इसके बाद आने वाला ओलंपिक्स, जिसके लिए हमारे प्लेयर्स तैयार हैं। दे आर रेडी टू चेंज द कलर, एंड वी ऑल इंडियंस हैव टू विश देम ग्रेट लक, ताकि इस बार जो है वो सुनहरा रंग, सोने का सुनहरा रंग चमकता हुआ हमारी आंखों में और ज्यादा स्पार्कल्स को भर दे, और वो खुशियों को भर दे जो हमें चाहिए, गोल्ड्स के रूप में एक और गोल्ड मेडल हमारे देश को मिल जाए। आई रियली विश ग्रेट लक, ताकि आप जिन प्लेयर्स पर इतना विश्वास जताते हैं, आप उनको चांस देते हैं, वो आपके जो विश्वास के प्रति पूरी तरह से खरे उतरे। थैंक यू वेरी मच जी आपका। और जैसे आपने बहुत ही मेरे से ज्यादा तो आपने ज्यादा बेस्ट विशेस दे दी। हम पूरे अमृतसर और पंजाब की तरफ से उनको बेस्ट विशेस देते ताकि वो मेडल का रंग जो है गोल्ड में लेके और भारत का नाम रोशन करे। थैंक यू। थैंक यू। सो अब स्प्रिंगडेल स्कूल के जो चेयरमैन सर हैं साहिल संधू सर, उनसे भी बात करेंगे, और किरत मैम से भी जरूर बात करेंगे। सो मैम, वी रियली लव टू टॉक टू यू एवरी टाइम, और आज भी एक बहुत ही खास मौका है, और हमने हमेशा देखा है कि आप और साहिल सर हमेशा ही बच्चों को इस तरह की इंस्पिरेशन देते हैं कि बच्चे अपने करियर को लेकर सीरियस तो हो, साथ ही साथ उनमें मोटिवेशन भी भर जाए। Absolutely. I mean, it's a big honor for us कि आज हमारे पास हॉकी मेंस वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड कप ट्रॉफी आई है, and it's not a small thing. I mean, it's a running trophy. बिल्कुल। So अगर आपने ट्रॉफी को देखा है और उसको टच करके देखा है, you will realize that it's a running trophy. It goes from country to country. Yes. I mean, team to team. And the main endeavor for us to bring this trophy in Springdale School is for our young generation, our students to get inspired. बिल्कुल जब वो एक देखते हैं, ट्रॉफी को देखते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, बिल्कुल। opposed to what you watch on TV, it's a Yes. completely different feeling. Yes, You know, that's a and, different experience of altogether, and ऐसे experience मुझे नहीं लगता कि हर एक को available होते हैं So easily. that's our endeavor. That I mean, we want to bring such experiences to our students in Springdale, and I feel what better way to inspire them by showing them that this is how prestigious and how big this is. And of course, we had our alumni जो हमारे Olympians खेल के गए, वो भी हमारे साथ थे आज. बिल्कुल। So they shared their own story बिल्कुल। and how they reached the World Cup.
and बस ये करते रहेंगे. In Yes. fact, we have told them that next जब भी main final match होगा, we would love to take our students and watch it in person as well. That's lovely. So, ma'am, we have always seen like जो Springdalians हैं, they are growing like anything. They are the doctors, they are the engineers, they are the in judiciary as well. They are the players, they are the great names of India as well. So, how do you see today's event gonna impact the students? So I think gone are the days where inspiration was just those conventional do teen tarah ke careers like doctors, engineers, or getting into law and stuff like that. With the ever evolving I would say scenario with education, now there's so many avenues. And now I feel on the whole, our country is giving so much importance and emphasis on sports and the way it is being recognized in every way. This is the best way for us to bring it here and ask our students to must consider this as an inspiration, as a full-fledged career option to kind of pursue it and of course get very persistent with it. So we really want to wish you great luck. इसी तरह से पूरे देश का नाम स्प्रिंगडेल्स रोशन करता रहे. ओलंपिक्स में जाते हैं हमारे शहर के स्टूडेंट्स और वो नाम रोशन करते हैं, वो भी स्प्रिंगडेल स्कूल की पूरी तरह से, मैं कह सकती हूँ पूरी तरह से ऐसी इनकलकेट की गई है फीलिंग और स्पोर्ट्समैनशिप और करियर के प्रति उनका ऐसा ध्यान बनाया गया है कि दे नेवर. And I feel that sports not just kind of inculcates, like you said, sportsmanship spirit and all that. It kind of keeps everybody away from bad habits. Yeah, that's the best. That is so integral. That is so integral. And I feel the moment you get into something like this, you are conscious of your body, you're conscious of your mental, physical health, everything. And there is a focus in life. Very true. For this generation, it is so important to bring that. Especially if we talk about Punjab, if we talk about Amritsar, it is very essential. Every student, every child has to be in the sports because it actually helps to prevent students or the child from the like जितने भी हम सुनते हैं कि हमारे शहर में, देश में नशे के प्रति जितने रुझान बढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल कट डाउन करने में this is the one thing can help hugely. Thank you so much, ma'am, for talking to us. Thank you. So, Sahil sir से भी जरूर बात करना चाहेंगे. Sir, we really want to congratulate you. This was the pride moment for Amritsar, which is brought by Springdale School. हमेशा ही ऐसा हमने सुना है, देखा है और बहुत सारे ओलंपियंस यहाँ पर आए हैं ऑलरेडी. अगर हम बात करें जो ब्रॉन्ज टीम रही है लास्ट ओलंपिक्स की, वो भी यहाँ आई थी, बच्चों को इंस्पायर किया. एंड आज वो जूनियर्स के लिए जो ट्रॉफी, वो उसको एक्सपीरियंस, जो रनिंग ट्रॉफी को यहाँ पर अनवेल करना वाज द बिगेस्ट मोमेंट. और वो अमृतसर के लिए खास मौका, मतलब कंट्री टू कंट्री जाने वाली ट्रॉफी आज हमारे अमृतसर शहर में अनवेल हुई है. आई रियली वांट टू से इट्स अ बिग मोमेंट फॉर अमृतसर. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग मोमेंट जी. एंड जैसे आपने बोला कि स्प्रिंगडेल का एक बहुत ही इलस्ट्रियस पास्ट है इंडियन हॉकी के साथ, इंटरनेशनल हॉकी के साथ, ऑल्सो ओलंपिक हॉकी के साथ. जी. We have 5 Olympians from our school. 3 are currently on the team right now as we speak. Raijit Hundal is in the junior team right now, and he's also going to go to in the next Olympics. Great. And trophy आपके सामने है. This is the that junior looks one. Beautiful. It's a beautiful running trophy. Yes. And as you can see that it's a running trophy, and I had said a little earlier कि may the best team win. Yeah. But the best team is definitely going to be Team India. बिल्कुल. और हमारा दिल तो इंडिया के लिए धड़कता है always. So we are going to make history again, God willing, in Chennai in December, and then we'll again host the team again over here once they win. Wow, that's And lovely. it's a very very proud moment for us to have. So that. how you see the students of school are prepared for this trophy? So to see something in front of you is a very different feeling, and I think this will एक बहुत ही लास्टिंग इम्प्रेशन रहेगा यंग माइंड्स पे. जब आप ट्रॉफी को देखते हो, एक टीवी पे देखते हो और आप एक रियल लाइफ में देखते हो, and उसको perceive करते हो कि perceive करते हो कि ये कल को even we can play for India and we can also lift this trophy. Yes. So it's unmatched feeling which cannot be described in words. Yeah, तो आपने तो वो spark देखा है बच्चों की आंखों में. बिल्कुल, absolutely. And that is part of our job over here, to create that excitement and that energy and that inspiration in the youth. जी.
it's also possible for us to play for India and to win this trophy. So what school will do more to like इन बच्चों में और ज्यादा हॉकी के प्रति जो भावना है उसे और ज्यादा जगाने के लिए क्या ऐसा और करने की सोच रहे हैं आप? कुछ है ऐसा या अभी आप बताना नहीं चाहते हो? नहीं, definitely hockey has come. I think you can just move. Yeah, sure, Seconds, yeah. Hockey has come a long way since the time that Dr. Sandhu, my father, and Mr. Shami had envisioned this जी hockey academy, because at that time hockey का decline चल रहा था इंडिया में. या बिल्कुल वेरी ट्रू So in the last 15 years, or I think 2 decades, hockey has seen a very upward trend, with us winning the Olympic medals also. बिल्कुल So I think hockey is on a very, very good track, good path in India. But that said, we should not become complacent. Yeah. We have to keep on motivating the youth. बिल्कुल And I am also a cricket fan. Cricket is हमारा इंडिया का Complete blue. है, but हमारा official sport, national sport is still hockey. या And we must do a lot to promote hockey, because we have had a much longer history with hockey. This year, coincidentally, is also 100 years of Indian hockey. बिल्कुल सो सर एक और चीज कहना चाहूंगी यहाँ पर हम बॉयज ओलंपियंस देख रहे हैं गर्ल्स की क्रिकेट टीम की बात करें दे हैव ब्रॉट द ट्रॉफी बिल्कुल. तो आप क्या देखते हैं किस तरह से क्या स्कोप देखते हैं गर्ल्स का हॉकी में किस तरह से स्कोप देखते हैं जूनियर टीम Valid or pertinent question. I think, excuse me, girls hockey needs to really be encouraged, या and it has a lot of potential. या But it is something I feel a little थोड़ा सा overlooked है. जी So I think Mr. Shami is here. He's a selector in the team. या He's only one of 4 selectors from the entire country. या In fact, he was just discussing with me that we should also probably look at starting a program probably, and it's a great idea. बिल्कुल We'll definitely look into how we can do it, and I agree. Girls के hockey में एक potential बहुत है, and it should happen. Like you see that या anything is possible. बिल्कुल Girls एवरीथिंग इज पॉसिबल everything is possible, and Yeah. girls can do whatever boys can do. या आपने cricket में भी देख लिया. बिल्कुल So we'll definitely think on working on something. बिल्कुल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारे जो अमृतसर की जो लड़कियां हैं वो इसमें पूरा अपना जज्बा दिखाएं एंड हॉकी की ऐसी टीम क्रिएट हो जो अमृतसर में ही वो ओलंपियन की मेडल्स God लेकर willing, आए. God willing, God willing. Thank you so Thank much, sir, for talking to us. Thank you. Thank you. And yeah, so thank you so much, sir. और यहाँ पर अब हम आपको एक बार फिर से उसी ट्रॉफी तक लेकर जा रहे हैं जिसकी चमक जो है चाहे जितने मर्जी बार ये रनिंग ट्रॉफी किसी भी देश में जा चुकी हो वो कम नहीं होती है, वो और ग्लोरीफाई हो जाती है और चमक बढ़ जाती है. सो हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर सेंथिल राजकुमार इज हियर जो कि हमें बताएंगे कि कितना एक्साइटेड है तमिलनाडु टू होस्ट दिस जूनियर वर्ल्ड कप. Yes. So sir, we really want to welcome you on Punjab. Thank you so much. Yeah. Fine. जी sir. I'm Dr. Sindhil Rajkumar, General Secretary, Hockey Road of Tamil Nadu. And in the view of the FIS Junior Men's World Cup, which was scheduled in Chennai and Madurai Yeah. from 28th of November to 10th of December, Yeah. we would like to take this World Cup to the entire country, throughout the country, and to have the feel of the World Cup happening in our, Yeah. because it's the most prestigious event. Yeah. So we started. The main unveiling ceremony was done by our Deputy CM, Chief Minister, Mr. Udayanidhi Stalin in Delhi on 7th of November. Yeah. From there, with our union ministers and sports minister. Yeah. And the trophy started from there, and we started from Haryana, Panchkula, and Chandigarh. And today we are here in this the land of hockey. Yeah. Actually, Punjab is always has given the lion's share of Indian pride, and it has produced a lot of Olympians and world champions and the greatest players we have seen in the earlier era and the modern era. Yeah. So how do you see this year if we talk about this Junior World Cup for men's? How do you see this trophy coming back to the country? saying about the percentage of winning. Yeah. Yeah, definitely. See, that would always I say with pride being from Tamil Nadu. Tamil Nadu has hosted more than around 6 to 7 international events in the past. And all those events, India has won. Oh, so Tamil this Nadu- time again, I want to cross my fingers, and I hope this trophy remains in the country only. This trophy remains at home, like हमारे पास ही रहे. And we wish great luck to all the players who are playing for India. So, you are making them feel prior
the championship or this tournament. So how do you feel this making them experience this trophy will make the difference in their performance? Yeah, definitely. See, one thing we are very sure that we don't want to put more pressure on our players. That's very important because the home ground and home country playing. And see, even now, even the Johor Cup, Sultan Johor Cup, they performed very well. Yeah. And still, we are expecting more of because the coaching staff, the support staff, and the entire Hockey India is backing the team. Yeah. Because the players have been given the best of facilities and best of training. Yeah. So definitely, we don't want to put pressure on our players, but definitely they will deliver. Bilkul. Yeah, We are definitely. looking forward as Definitely, well. sure. And we want to talk once this trophy is backed by Indian team again, and the pride is at home only. Absolutely. Probably your words come true. Yeah, So- we are hoping. We are hoping. Fingers crossed, and we wish our Indian hockey junior team to back this trophy again. And like आज उन्होंने feel किया इसे यहाँ पर feel किया different जो cities में feel कर रहे हैं बच्चे, but ये हमारे पास as a winning trophy जिस तरह से हर देश में जाती है, ये हमारे देश में एक winning trophy, हमारे देश के लिए winning trophy बने. We wish every one of us a great luck for this trophy, and we are looking very much forward to have it in the country. Absolutely. That's what. It's definitely it's going this winning the trophy will definitely mean a lot to India. Yeah, Because now we have been in the different era of modern hockey. yeah, And we are constantly we're going because now today's sports has been we got a lot of science Yeah. into it. yeah. So our training methods and even our sporting culture has changed, especially in hockey, I'm saying. Yeah. So this win is going to be really, really vital to shape the future hockey of India. And definitely we could all our youngsters are looking forward, and this win will definitely drag more number of athletes into this game. Actually, And and even the government and the public also will start to support will of be creating an- more, yeah, more this will be infrastructure. this will be an inspiration for the Olympians as well. That if our juniors can do it, we really have to change the color to gold this year. Definitely, sure. Not only this FIS Junior World Cup and in the future endeavors whichever Indian team is participating, I would say Hockey India is preparing the team very, very professionally. Wow. Because a setup is like that with the leadership of Dilip Turkey President Yes. and Bolanath Singh Ji, Yeah. Secretary General, and our Treasurer Mr. Shekhar J. Manogaran. They are being into truly professional setup. And the Great. team and the players also will know that how far they have been taken care of and how the training process and even our head coach, the men coach or the women coach, all of them they're putting heart and soul into it. Yeah. And because the entire nation, because hockey is not just a game in our country, Yeah. it is more than that. It is a religion of our country. Actually, very true, absolutely true. And we are actually just looking forward to this love should grow like anything by each every second in our country. Every student, every player should love this hockey. तमिलनाडु की जो हमारे साथ यहाँ पर जी जनरल सेक्रेटरी हैं, एंड ही इज द इंस्पिरेशन, एंड वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं. वी हैव टू एक्चुअली मेक इट बिग फॉर द नेशन, एंड वी हैव टू आज I will touch this trophy definitely. Can I touch? I really want to feel this trophy actually. और मुझे goosebumps आ रहे हैं. तो I'm sure जो players हैं उन्हें ये trophy देखकर जो एक feel आ रहा होगा, you can see the years and the countries who have won this trophy, और इस बार यहाँ पर जो engrave हो वो India का नाम हो. We really wish that, and so we really want to say thank you for giving this chance to every player, every aspiring hockey player to just experience this trophy, so that they have the feeling of achieving this trophy, winning this trophy. And the idea is beautiful, wonderful, to take this trophy to the different states and to Amritsar in Springdale School. This is beautiful moment which is never forgettable. इसको unforgettable कह सकते हैं. एंड आपको कैसा लगा ये ट्रॉफी देखकर? प्लीज कमेंट्स कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि क्या फील करें इस ट्रॉफी को. लाइव तो मैंने देखा है, बट आई एम श्योर जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं लाइव देख लेती हूँ, उनके लिए भी लाइव हो जाता है. सो we are looking forward. Thank you so much, sir, for talking to us. We wish you and the team of India great, immense And luck. on behalf of our government of Tamil Nadu, especially our beloved
Honorable Chief Minister Mr. M.K. Stalin and our Chief Minister and Sports Minister Mr. Udinidhi Stalin. I extend a very, very warm welcome to all of you to come and witness and support India to make India win. Yes, come on India, dikha do. And we are looking forward as well, or we hope to see this trophy on the ground, and we hope to see our India team lifting this trophy with the full of josh and hosh. So see you guys there. हम भी चलेंगे, आप भी चलना, and we will have this experience, beautiful experience, and इसे और भी खूबसूरत बनाएंगे इस सारे इवेंट की यादों के साथ. Thank you so much, sir. Thank you. It was amazing talking to you. It's really a Thank pleasure talking to you. Thank you so much. So ये खूबसूरत ट्रॉफी कौन नहीं चाहेगा कि देश की शान को और बढ़ाए. So if you wish our country to win this trophy, then please बहुत सारी बेस्ट विशेस के साथ कमेंट्स में भर दीजिए आपकी बेस्ट विशेस इंडिया टीम, इंडिया जूनियर हॉकी टीम के लिए. एंड बने रहें पंजाब केसरी पर. देखते हैं पंजाब केसरी, क्योंकि पंजाब केसरी है आपके दिल की धड़कन.